Hello guys, in this video we talk about Italian alphabets and exact alphabets pronunciation. I will make sure कि आप किसी भी कंट्री से हों आपको pronunciation की अच्छी तरह समझ लग जाए, इसीलिए मैंने नीचे उर्दू में भी लिखा है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें. Let's start. And the first letter is A. In Italian it's called A. A. एंड द सेकेंड वर्ड इज़ बी. इसको इटालियन में बी ही बोलेंगे, बी. नेक्स्ट वर्ड इज सी एंड इन इटालियन इट्स कॉल्ड ची. ये ची कहलाता है, ची. नेक्स्ट वर्ड है डी एंड इटालियन प्रोनाउंसिएशन इज दी, दी. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ई. इन इटालियन इट्स कॉल्ड ए, ए. अगला लफ्ज़ एफ़ है. एफ़ को कैसे बुलाएंगे? एफ़ ए, एफ़ ए. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जी. इन इटालियन इट्स कॉल्ड जी, जी. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एच एंड इट्स एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आक्का, आक्का. नेक्स्ट लेटर इज आई एंड इन इटालियन इट्स कॉल्ड ई, ई. Next word is L and it's called LA, LA. And the next word is M, it's called MA. थोड़ा सा खींच कर लंबा करेंगे, MA. Next word is N and it's called NA. इसको भी M की तरह थोड़ा सा खींचेंगे, NA. O and it seem like English O. Same pronunciation, O. Next word P is also similar pronunciation like English, P. And Q in Italian its pronunciation is Q, Q. R sounds like R, R. S को कैसे पढ़ेंगे? S से. Sounds like S से. Next word is T and it's called T, T. अगला लफ्ज़ है U and it's called U. इसको U पढ़ेंगे, U. And V in Italian it's VU, VU. And the last word is Z and its correct pronunciation is Zetta, Zetta. Now listen carefully. These red letters are missing in Italian alphabets because Italian alphabet has only 21 letters. But in this video, we learn how to pronunciate these letters in Italian. Let's start. In Italian, J called J and E lunga, E lunga. And K sounds like kappa, kappa. W Vudopia, Vudopia. And X in Italian, X called X, X. Y को Y भी बोलते हैं and it's called Epsilon, Epsilon. Now Italian alphabets are completed. Let's repeat it. You can repeat with me for pronunciation. A, B, G, D, A, F, G, H, E lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, doppia, X, Y, Z. I hope this video is helpful for you. Ciao.